गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है मिस फायरिंग ऑफ मिसाइल। तो आपको पता है कि अभी इंडिया से गलती से एक जो है टेस्ट मिसाइल जो है वो फायर हो गई थी पाकिस्तान की तरफ। तो वो अंदर 124 किलोमीटर लगभग चली गई थी पाकिस्तान में, और उससे एक मतलब समझ लो आप एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग को हार्म हुआ है। तो इंडिया ने उस इंसिडेंट को एक्नॉलेज करते हुए बोला कि एक टेक्निकल मालफंक्शन हुआ था, जिसकी वजह से ये मिसाइल जो है वो एक्सीडेंटली फायर हो गई थी। तो अब हमारी कुछ ऐसी एग्रीमेंट्स हैं पाकिस्तान के साथ, जिसकी वजह से हमको उनको बताना पड़ता है कि कोई हम अगर मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं। जैसे एक प्री नोटिफिकेशन ऑफ फ्लाइट टेस्टिंग ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स एग्रीमेंट है, जो कि 2005 में हमने साइन किया था। और इसके अंदर हमें एडवांस उन्हें नोटिफिकेशन देनी पड़ती है जब भी हम कोई मिसाइल की टेस्टिंग करते हैं। तो इसको हम कहते हैं नोटिस टू एयर मिशंस और नेविगेशनल वार्निंग। जो हमको आसपास के, अगर हम सी में टेस्ट कर रहे हैं मिसाइल को, तो हमको आसपास उनको सी में बताना पड़ता है कि आप इस एरिया में मत आना। अगर हम एयर में टेस्ट कर रहे हैं तो उसके आसपास हमें उनको बोलना पड़ता है कि आप उसके जो है वो 40 किलोमीटर या 75 किलोमीटर का जो एरिया है इम्पैक्ट एरिया, वहाँ तक आप मत आना, ताकि एक तरह से कोई भी थ्रेट को अवॉइड किया जा सके। ठीक है। तो जो भी कंट्री टेस्ट करती है, चाहे पाकिस्तान टेस्ट करे चाहे इंडिया टेस्ट करे, तो वो 40 किलोमीटर से जो है दूर होना चाहिए बॉर्डर से एटलीस्ट, लॉन्च साइट जो है। और इम्पैक्ट एरिया उसका 75 किलोमीटर से दूर होना चाहिए। मतलब उस जो उसका इम्पैक्ट होगा वो, एक तो टेस्ट तो है जो 40 किलोमीटर से दूर होना चाहिए, और इम्पैक्ट जो है वो 75 किलोमीटर से ज़्यादा से दूर होना चाहिए, ताकि मतलब ऐसा ना हो कि आप इंटरनेशनल बाउंड्री के बिल्कुल 75 किलोमीटर के पास में आप टेस्ट कर रहे हो, ताकि उसका इम्पैक्ट जो है वो कुछ जो है वो दूसरी बॉर्डर के दूसरी साइड चला जाए। ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ता है, और ये हमको फोकस रखना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि कभी वो मिसाइल जो है वो, उसकी ट्रेजेक्टरी जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री को या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके दूसरी कंट्री में चली जाए। ठीक है। तो अब ऐसा हो गया इस बार, तो इसलिए हमने उनको जो है वो एक्नॉलेज किया है। और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट कुछ दिनों में जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए जो है, जो नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई कर देगी। ठीक है। ऑफ कोर्स इसके लिए एक हाई पावर्ड कमेटी भी बनाई है कि ये इंसिडेंट हुआ कैसे है, इसको भी जो है वो जो है इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैनुअल स्कैवेंजिंग। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग आपको पता है ना क्या होता है? तो पहले तो आपको ये न्यूज़ पता होनी चाहिए कि 3 लेबरर्स जो हैं वो मुंबई में उनकी डेथ हो गई है। मैनुअल स्कैवेंजिंग में वो इन्वॉल्व थे। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब होता है कि ह्यूमन एक्सक्रीटा को हाथों से साफ करना, सीवर्स में से और सेप्टिक टैंक में से। तो इस ये बैन है, ये प्रैक्टिस इंडिया में ऑलरेडी, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट के अंडर। और कोई भी इंडिविजुअल जो है वो मैनुअली क्लीन नहीं कर सकता सीवर्स को, सेप्टिक टैंक्स को, या फिर इवन रेलवे ट्रैक्स को। ठीक है। तो अब इसकी जो है डेफिनेशन 2013 में बढ़ा दी गई थी मैनुअल स्कैवेंजिंग के, और उसमें रेलवे ट्रैक्स की सफाई जो है मैनुअली हाथों से करने के लिए भी बैन लगा दिया गया था। ठीक है। अब फिर भी लेकिन ये जो है प्रैक्टिस चलती आ रही है, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव पड़ती है लोगों को। मतलब समझ लो, जैसे एग्जाम्पल जिसमें दिया हुआ है कि मुंबई में बीएमसी जो है उनकी जो आपकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वो वैसे 3 से 4 हज़ार रुपये लेती है सफाई के। और 20 से 30 हज़ार रुपये, आई एम सॉरी, 20 से 30 हज़ार रुपये लेती है सफाई के, अगर आपको जो है सफाई करानी हो अपने सेप्टिक टैंक्स की। लेकिन जो है अनस्किल्ड लेबरर्स जो हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में जो इन्वॉल्व हैं, उनको 300-500 रुपये में आप जो है सफाई करवा सकते हो, तो बहुत सस्ता पड़ता है। तो इसलिए कोई 20 से 30 हज़ार रुपये खर्चेगा क्यों? ठीक है। लेकिन लोग जो हैं, ये अनस्किल्ड लेबरर से जो है वो ये काम करवा लेते हैं, और उसमें जो है कई बार जो है आपको ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। तो डिस्पाइट जो है लॉ, ये प्रैक्टिस फिर भी इंडिया में बहुत ज़्यादा चली आ रही है। और पिछले 2016 से 2020 के आंकड़ों के मुताबिक 472 लोग जो है वो मैनुअल स्कैवेंजिंग के टाइम पर जो है वो मर चुके हैं। ठीक है। तो हम थोड़ा सा इस एक्ट के बारे में भी देखते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट ऑफ 2013। तो इसके अंदर कहा गया है कि जो है मैनुअल स्कैवेंजिंग उसको प्रोहिबिट किया जाए हर तरह की फॉर्म में। और इवन मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस ऑफ इनसैनिटरी टॉयलेट्स के ऊपर भी जो है वो प्रोहिबिशन लगाई गई है। ठीक है। मतलब कि गंदे जो टॉयलेट्स हैं उसकी कंस्ट्रक्शन करना, या उसको मतलब गंदा रखना और उसको सफाई करवाना जो है, वो भी इनसैनिटरी टॉयलेट्स का जो है वो भी बैन लगाया हुआ है। ठीक है। सो अब जो है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है,
और ये नॉन बेलेबल भी है, ठीक है। मतलब कि अगर ऐसा ऑफेंस हुआ है तो इसकी कॉग्निजेंस लेगी, मतलब पुलिस, आपको पता ही होगा कि इस ये केस बनता है और नॉन बेलेबल केस है ये, ठीक है। मतलब इसमें अगर कोई फंस जाता है, ऑफ कोर्स किसी के ऊपर एक्यूजेशन आता है और वो प्रूव हो जाता है तो इस पर बेल नहीं मिलती है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। तो पीएम मोदी जो है उन्होंने अभी राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जो है वो उसकी न्यू बिल्डिंग जो है वो डेडिकेट किया देश को। गांधीनगर में बनाई गई है ये, और ये एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है। एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा इसको बनाया गया है, ठीक है। तो ये एक एकेडमिक रिसर्च करती है यूनिवर्सिटी की नेशनल सिक्योरिटी के लिए और पुलिस के लिए भी, ठीक है। सिर्फ अब ये आपको राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से कंफ्यूज मत होना कि सिर्फ डिफेंस से रिलेटेड है। तो ये ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी और पुलिसिंग हर चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। पुलिस एजुकेशन, रिसर्च, ट्रेनिंग, इन सब चीज़ों को जो है पर इसमें ट्रेनिंग कराई जाती है, ठीक है। सो अब इसके जो है कुछ जो कॉन्वोकेशन भी हुई है उसमें भी पीएम मोदी जो है उन्होंने एज चीफ गेस्ट इसमें पार्टिसिपेट किया है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाई पावर्ड कमेटी ऑन चार धाम परियोजना। तो आपको पता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्स जज हैं ए के सिकरी जी, उनकी चेयरपर्सनशिप में एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है और कहा है कि आप देखो कि चार धाम जो महामार्ग विकास परियोजना है उसका क्या इम्पैक्ट होगा हिमालयन इकोसिस्टम पर। तो इससे पहले भी एक कमेटी थी प्रोफेसर रवि चोपड़ा की, और उस कमेटी में जो है प्रोफेसर रवि चोपड़ा ने जो है वो लेटर लिखी थी जनवरी में कि वो अब जो है वो इस कमेटी के हेड नहीं बनना चाहते। तो इसीलिए जो है गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्स जज ए के सिकरी को इसका चेयरपर्सन बनाया है। और जो चोपड़ा जी की कमेटी थी उसमें जो है उन्होंने सेंटर की जो डिमांड थी कि जो चार धाम परियोजना के हाईवे की विड्थ जो है वो 10 मीटर जो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही थी उसको कहा था कि नहीं 10 मीटर नहीं चौड़ी नहीं होनी चाहिए, वो सिर्फ 5.5 मीटर चौड़ी होनी चाहिए। 10 मीटर रखोगे तो ज़्यादा पहाड़ तोड़ने पड़ेंगे, है ना, तो ज़्यादा जो है नुकसान होगा इकोसिस्टम का। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि 5 से 5.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वो ब्रॉड। और उन्होंने कहा था जो पिछले साल फ्लैश फ्लड्स आई थी धौलीगंगा रिवर में उसको भी लिंक किया जाए कि उस वो भी इस चार धाम परियोजना की ही वजह से हुई है, ठीक है। तो लेकिन ऑफ कोर्स वो गवर्नमेंट ने नहीं मानी है दोनों चीज़ें, और इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में जो है वो आर्गूमेंट दे रही है। और इसीलिए जो है अब ये उन्होंने रिज़ाइन कर दिया इस कमेटी से, और अब जो है न्यू जज जो है ए के सिकरी जी जो है वो इस कमेटी के चेयरपर्सन बनेंगे। तो हम देखते हैं चार धाम परियोजना क्या है। तो ये यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ को लिंक करने की ये परियोजना है। और जो एक पार्ट है जो कि कैलाश मानसरोवर यात्रा की तरफ जाता है उसके उस पे भी जो है वो ऑलमोस्ट 880 किलोमीटर का आप कह सकते हो कि ये हाईवे बनाने की, डबल लेन हाईवे बनाने की परियोजना है, ठीक है। तो 10 मीटर के सेंट्रल गवर्नमेंट तो कह रही है कि हम 10 मीटर की विड्थ वाली रोड बनाना चाहते हैं, लेकिन बहुत से इन्वायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं कि जो 10 मीटर की विड्थ का मतलब क्या हुआ कि आपको बहुत ज़्यादा पहाड़ तोड़ने पड़ेंगे, बहुत जो है वो पहाड़ों का जो है हमारे इकोसिस्टम का, हिमालयन इकोसिस्टम का नुकसान हो जाएगा। तो इसके लिए ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है। अब इसकी पूरी टोटल कॉस्ट जो है वो कहा जा रहा था कि 11,500 करोड़ के आसपास पड़ेगी, लेकिन जो है वो कॉस्ट तब की जो है वो एस्टिमेट थी जब अगर ये परियोजना मार्च 2020 में पूरी हो जाती, लेकिन मार्च 2020 के बाद कोविड आ गया, फिर ये केस भी चल रहा है, तो ये अभी तक पूरी नहीं हुई है। ऑफ कोर्स बहुत सारा जो है इसका काम हो चुका है, लेकिन अभी भी इसको पूरा नहीं किया गया है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज सिलिप्सोमोपोडी बाइडनी। सो एक ऑक्टोपस की पुरानी स्पीशीज है सिलिप्सिपोमोपोडी बाइडनी, जो कि अभी मिली है मोंटाना में। मोंटाना एक यूएस में स्टेट है कनाडा के बॉर्डर के आसपास। तो देखा गया है कि ऑक्टोपस के उस टाइम पर 10 आर्म्स होती थी, ठीक है। अभी तो आपको पता है ऑक्टोपस की 8 आर्म्स होती हैं, लेकिन देखा गया है कि उस टाइम पर ऑलमोस्ट 82 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो 10 आर्म्स होती थी। वो इस स्पीशीज़ के हमको फॉसिल से हमें पता लगा है, ठीक है। तो ये ओल्डेस्ट सिलिप्सोमोपॉडी बाइडनी जो है वो ओल्डेस्ट नोन रिलेटिव है ऑक्टोपस का, और उनके 10 आर्म्स होते थे। धीरे धीरे जो है वो फिर उसके बाद जब एवोल्यूशन हुआ तो फिर वो 2 आर्म्स खत्म हो गई और अब 8 आर्म वाले ऑक्टोपस हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो केरला जो है वो उन्होंने फिर से जो है वो कंट्री में टॉप किया है मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ में। उन्होंने जो है वो पूरी कंट्री में सबसे लोएस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो
रिकॉर्ड किया है, जो कि है 30। ठीक है, तो मतलब कि 30 जो है वो विमेन जो है उनकी लाइफ जो है वो मतलब उनकी डेथ हो जाती है पर 1 लाख लाइव बर्थ्स में। ठीक है, एज पर मतलब ये केरला का रिकॉर्ड है। और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की पहले तो डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक डेफिनेशन क्या है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की, कि अगर एक विमेन की या तो प्रेगनेंसी के टाइम पर या फिर 42 डेज आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में अगर डेथ हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, तो अब जो सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किया है, तो उसके मुताबिक केरला में 30 ये पहुंच चुका है। ठीक है, उसके अलावा जो है जैसे हमारा महाराष्ट्र है, उन्होंने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। वो भी पिछले पिछले रिपोर्ट के मुताबिक 55 थे, और इस बार जो है वो 38 पर अपनी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को ले आए हैं। ठीक है, तो हमको देखना पड़ेगा कि ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया क्या है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती हैं ये डिपार्टमेंट, और ये पॉपुलेशन का सेंसस करने का काम, फिर जो है जैसे आपका ये सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जिसमें कि हम फर्टिलिटी रेट मोर्टेलिटी रेट देखते हैं, वो भी यही करते हैं, उसके भी जो है वो सर्वे यही करते हैं। तो ये आपका सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम कह सकते हो कि लार्जेस्ट डेमोग्राफिक सैम्पल सर्वे है हमारी कंट्री का। इससे हमें पता लगता है कि क्या कंट्री में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट चल रहा है। तो हम ये कंट्री वाइड इसको करते हैं, और ये आपका रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है ये आपको होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, और सेंसस ऑफ इंडिया भी यही करता है। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जिनीवा कन्वेंशंस। तो अभी रशियन मिलिट्री जो है वो यूक्रेन में जो है वो ऑफेंसिव कर रही है, तो उनको बहुत सारे एक्यूजेशंस लग रहे हैं उनके ऊपर कि उन्होंने जिनीवा कन्वेंशंस का वायलेशन किया है। तो हमको ये देखना पड़ेगा, ये टॉपिक अब न्यूज़ में आ गया तो ये जो है जिनीवा कन्वेंशंस 4 ऐसी ट्रीटीज़ थी जो कि 1949 में साइन की गई। तो ये एथिकल और लीगल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाती हैं कि कैसे जो है वो ह्यूमैनिटेरियन ट्रीटमेंट देना है टू दोज पीपल जो कि वॉर से इम्पैक्ट हुए हैं। ठीक है, तो नॉन कॉम्बैटेंट्स और प्रिजनर्स ऑफ वॉर दोनों के लिए ये कन्वेंशंस बनाए गए हैं। इसके बाद थोड़े कुछ प्रोटोकॉल्स भी हैं। तो कन्वेंशंस जो है वो आपके 196 मेंबर स्टेट्स ने साइन किए हुए हैं, रेटिफाई भी किए हुए हैं, और लगभग सारी मतलब आपकी सारी यूएन मेंबर स्टेट्स ने इसको जनीवा कन्वेंशंस को रेटिफाई किया हुआ है। तो फर्स्ट जो जनीवा कन्वेंशन है वो आपका वुंडेड और सिक सोल्जर्स से डील करता है जो कि लैंड पर लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड जिनीवा कन्वेंशन आपका उन वुंडेड सिक सोल्जर्स से डील करता है जो कि सी में लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड जो जिनीवा कन्वेंशन है वो आपको उनसे डील करता है जो कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं, उनकी कैसे ह्यूमैन ट्रीटमेंट होनी चाहिए, मेंटेनेंस और इक्वालिटी कैसे उनकी प्रिजनर्स की जानी चाहिए, ये उससे ट्रीट करता है। जो फोर्थ जिनीवा कन्वेंशन है ये आपके सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने की के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ये 4 कन्वेंशंस हैं। ये अगर कोई कंट्री वायलेट करता है तो उसके ऊपर सैंक्शंस लगाती हैं दूसरी कंट्रीज, और इवन उसके ऊपर कोई मिलिट्री एक्शन लेना हो तो वो भी लिया जाता है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is misfiring of missile. So recently, you know that India has mistakenly fired a missile. It was actually a test missile, and it went inside the Pakistani territory by almost 124 kilometers. And the Indian government acknowledged this, and it said that it was a technical malfunction, and that's why it led to the accidental firing of a missile towards Pakistan. So according to the rules, or according to the bilateral agreements between the two countries, there are certain procedures which need to be followed in to about such incidents, before such incidents. Okay, so there is one pre-notification of flight testing of ballistic missiles agreement of 2005, under which we have to provide advance notification that we are testing testing a missile. It could be either a land based, sea based, or a surface to surface ballistic missile. So before the test, the country has to issue notice to air missions or navigational warning to the other country, that in case of course an air test, then we have to alert the aviation pilots of the other countries, and other country, which in case this is Pakistan. And in case we are testing the missiles in the sea, then we have to warn the seafarers also. Okay, so the rules according to these treaties are that the launch site must not be located within the 40-kilometer radius of the borders. So you just cannot test a missile just 40 kilometers away from the international border or the line of control.
Okay. Similarly, the impact of the test must not uh, cr- uh, cross the 75-kilometer area. Okay. So even if you're testing a missile, let's say in 45 kilometers, so its impact should not, it should be with let's say in 300 kilometers area from the international boundary. So its impact should not be within the 75-kilometer area from the international boundary or the line of control. Okay. So in this case we have breached these provisions. We have rather fired the missile into inside the territory of Pakistan. So that's why there will be some agreements. Both states have handled this situation maturely. India has acknowledged that it has fired the missile due to a technical malfunction, and the government of India has rather also set up a high powered committee to investigate this matter. And hopefully in the next few days the government of India will also announce the also announce some financial help to the house or the residential complex which has suffered losses due to the this missile or firing into the state of Pakistan. Okay. So now let us see the next topic, which is manual scavenging. So three laborers in Mumbai which were hired for manual scavenging have died after inhaling the toxic fumes in a septic tank. So what is manual scavenging? So it means that it is the practice of removing human excreta by hand from sewers or septic tanks. So it is basically, removing the human excreta from the hands, or from the hands, from your gutter. You can call it gutter. Okay. So this practice is actually banned under the law, which is the 2013 act. It is called Prohibition of Employment as Manual Scavengers and the Rehabilitation Act. So it bans the use of any individual for manual cleaning, carrying, disposing of, or otherwise human excreta till its disposal. Okay. So in 2013 we also added the clearing of railway tracks or ditches into the broad definition of manual scavenging. Okay. So currently we still uh, practice it in India despite this law. Why this manual scavenging is being continues to be practiced in India? Because it is cost effective. So like there is an example here. The Mumbai civic body, that is the BMC, charges around 20,000 to 30,000 rupees to clean a septic tank, but one can get it cleaned through a private party, and it will be much cheaper to hire because the laborers, the unskilled laborers, take about just 300 to 500 rupees to clean the septic tank. Okay. So this is the reason why this practice has is continuing even now, because it is very cost effective, and even the state authorities lack the necessary will to enforce the provisions of this act, and that's why the unskilled laborers are continued to be exploited. So let us see something about this Prevention of Manual Scavenging Act also. So this act bans manual scavenging in all forms, and it also makes it mandatory to identify the manual scavengers in every state through a survey. It prohibits the construction or maintenance of insanitary toilets also, where there is, which means that uh, toilets must have proper septic tanks, and there must be proper disposal of human excreta. It should not be such a toilet that it which needs manual cleaning of that toilet. Okay. So it prohibits that construction of such toilets. So the offences under this act are cognizable and they are non-bailable also. So now let us see the next topic, which is Rashtriya Raksha University. So recently PM Modi has dedicated to the nation the building of Rashtriya Raksha University. So this university is already working, but the building has been recently inaugurated by PM Modi in Gandhinagar. Okay. So it is an institution of national importance. It was of course established by an act of parliament, and it aims to become an academic research training ecosystem for national security and police. So not just for the army, but for policing purpose also. It carries out highly professional research, education, and training for the personnel. Okay. So like I was telling you, this university is already functioning. So almost 1090 students have received their degrees, and the prime minister was the chief guest during this convocation ceremony.
So now let us see the next topic, which is high-powered committee on Char Dham Pariyojana. So recently, Supreme Court has appointed ex-judge A.K. Sikri as the chairperson of this high-powered committee, which would consider the impact of Char Dham Pariyojana on the Himalayan ecosystem. So earlier there was Professor Ravi Chopra who was heading this committee, but due to some reasons he resigned in January, and that's why the Supreme Court had to appoint A.K. Sikri as the new chairperson. So the Chopra committee actually opposed the demand of the central government that the highways must be 10 meters in width, and uh, rather the Chopra committee insisted that it should be limited to 5.5 meter, because we do not want to unnecessarily damage the Himalayan ecosystem. Okay, so this committee also sought that the last year's flash floods must be linked to the act of broadening the roads. So he was indirectly saying that because of broadening of the roads to 10 meters, this the flash floods have damaged the Tapovan hydro project, and it also led to loss of lives. Of course, these both arguments were not accepted by the central government, and several arguments were given by the central government in the Supreme Court. That's why this Professor Ravi Chopra resigned, and this new chairperson has come up. So what is this Char Dham Pariyojana? So it is basically providing a single lane, the currently single lane lane roads into double lanes with almost 10 meters wide. This is almost 880-kilometer long project, and it will connect Yamunotri, Gangotri, Badrinath, and Kedarnath, and a part of the route that leads to Kailash Mansarovar Yatra. So the project was actually scheduled to be completed by March 2020, but due to several reasons, the COVID pandemic, and later on this pariyojana also went into the court. So there have been some hiccups in the implementation or the construction of this project. Okay, so now let us see the next topic, which is Silpsipomopedi Podi bideni. So this is a form of octopus. It's a fossil rather. It is almost 328 million years old fossil, which has been unearthed in central Montana. So Montana is a state in US which borders around I think Canada, and this fossil has been found. And currently today, these octopuses have eight arms, but this fossil was having 10 arms. So the scientists are concluding that this species, actually the octopus were having 10 arms, but later on due to evolution, the two arms were lost in that evolution, and now the octopuses are having just 8 arms. So now let us see the next topic, which is maternal mortality rate. So Kerala has emerged as once again as the top state in India with respect to maternal and child health. So it has recorded the lowest maternal mortality rate of just 30 as per 1 lakh live births. So as per World Health Organization, maternal death means death of a woman while she is pregnant, or within the 48 days of termination of pregnancy. Okay, so according to the latest sample registration system which is conducted by the Registrar General of India, Kerala has seen a tremendous improvement. So it was earlier, as per the last bulletin of 2015-17, the Kerala state recorded MMR of 42, and now it has recorded just 30 per 1 lakh live births. Okay, and another state which has shown improvement is Maharashtra. So it has also shown a considerable improvement. So from 55 in last report, the maternal mortality rate in the state has dropped to 38. So about the Registrar General of India, it falls under the domain of Ministry of Home Affairs, and apart from conducting the decadal census, or the population census, it has also been conducting estimates on fertility and mortality rate using the sample registration system. So this sample registration system is the largest demographic sample survey in the country, and it provides us the direct estimates of maternal mortality at the national level.
So now let us see the next topic, which is Geneva Convention. So now you know that Russia has invaded, or you can say Russia is being the aggressor in Ukraine, and several accusations have been made against Russia that it is violating the Geneva Conventions. So because this topic has come into news, we have to see what are the Geneva Conventions. So it is basically, Geneva Conventions are a set of four treaties which were formalized in 1949. So they mention about the ethical and legal international standards which must be taken care during the war. Okay, so it deals with both the non-combatants, that is the civilians, and the prisoners of war also. Okay, so almost 196 member states have of the UN have ratified it, and the first Geneva Convention deals with wounded and sick soldiers who are fighting the war on the land. The second Geneva Convention deals, or rather protects, the individuals or military personnel who are fighting the war at the sea. The third convention applies to prisoners of war, how they must be treated, how human treatment must be given to them. And the fourth one deals with civilians. Russia is accused of violating almost all these conventions, and most probably the fourth one, which is the most serious one. And several countries are that's why several countries are raising voice, rather the NATO countries are raising voice, that Russia should be sanctioned further because it has violated the fourth Geneva Convention, which protects the civilians. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.